वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़हुव यक़ूल इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम व मुकर्रम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, इज़्ज़त माब मेरी माँ और बहनों, इंतहाई एहतराम व अक़ीदत मोहब्बत के साथ आक़ाए नामदार मदनी ताजदार हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अपनी मोहब्बत का सबूत देते हुए दुरूद पाक का हदिया पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Alhamdulillah, the month of Rabi'ul Awwal, in which we celebrated, and throughout the year we celebrate the Mawlidun Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, has completed, and now we are in the month of Rabi'ul Thani. यकीनन रबीउल सानी का जो महीना है, रबीउल आखिर जिसे हम कहते हैं, इस महीने को हम मंसूब करते हैं हज़रत गौसुल आज़म दस्तगीर पीरान पीर हज़रत मुहियुद्दीन शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात बाबरकत से। इस महीने में हज़रत गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ, एंड around the globe people who are Qadri and people who particularly follow the Qadri tariqa, the spiritual chain, it reaches to Hazrat Sayyidina Shaykh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala thumma Baghdadi, and therefore the month in which he passed away, month of Rabi'ul Thani, we always remember his life, we talk about his life, and we talk about the teachings that in his life he delivered to the people around him, and hundreds and thousands of his students which he guided to the path of Islam and to the path of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And it is more related to today's day and age than ever before. The reason is, if you look deep, that in today's day and age, people are, when they talk about Islam and when they portray Islam, it could be in social media, in the news, many other places, the first thing that comes in mind, any terrorist attack happens, they say Islamic terrorism. If you look deep, the person who is terrorizing others, he has nothing to do with the religion. लेकिन ये एक propaganda ऐसा बन गया है, especially after 9/11, that whenever, if there is a person, namely Muslim, and any kind of act of terrorism comes from that person, it is directly related, ma'azallah, to his deen, and that is how it's portrayed. Islamically, we believe, and every single sect, they do believe in awliya Allah. What is wali? Wali is completely what media portrays Islam
completely against it. The Wali Allah is the one who spreads the message of Islam in the best possible manner, with his life, with his characteristic, and he spreads Islam with love within communities, and not one community, throughout, be it Muslim, non-Muslims, any background, any religion you follow. When it comes to the Wali of Allah subhanahu wa ta'ala, it is always about love, always about peace. And in the history of Islam, nobody can show that any saint of Allah subhanahu wa ta'ala can be portrayed as a harsh person, can be portrayed as someone who used to hit people, who used to kill people, ma'azallah. So, the concept of awliya Allah in Islam, it needs to be apparent, it needs to be made apparent in front of people more than ever. Hazrat Sayyidina Ghawsul Azam Dastagir radiyallahu ta'ala and Shaykh Abdul Qadir Jilani Thumma Baghdadi radiyallahu ta'ala, he is one of the shining star in the sky of wilayat. And not just a star in the sky of wilayat. If in the light of the books which are written regarding the life of Hazrat Shaykh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala, if I may say that he is the sun in the sky of wilayat, I will not be wrong. कि अगर मैं ये कहूँ कि विलायत के आसमान के हज़रत गौस पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु सूरज हैं, तो ये कोई समझ लें कि एग्जेजरेशन नहीं है, बल्कि हज़रत गौस पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात बाबरकत ऐसी ही थी। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने कुरान पाक की आयत करीमा के अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न कोई गम, इस आयत का ज़िक्र हुआ तो सहाबा ने अर्ज़ की, सुइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन औलिया अल्लाह. A prophet was questioned about the awliya Allah, that Ya Rasulullah, who are awliya? And we do in a way, in today's day and age, we have this portrait of wali in our mind. We want physical appearance to look like wali, that this person looks like wali. What is the actual concept of wilayat from the ahadith of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam? So Prophet sallallahu alayhi wasallam, he mentioned after this question that alladhina idha ru'u dhukira Allah. A wali is someone, when you look at them, when you have the vision and look at their face, what do you see? Prophet said, they remind you of Allah subhanahu wa ta'ala. You look at them and soon, does not matter how big sinner you are, what kind of life you are leading or living, it does not matter. When you look at the wali of Allah subhanahu wa ta'ala, they remind you of Allah subhanahu wa ta'ala. कि वली के बारे में जब हुजूर से सवाल हुआ तो हुजूर अकरम ने ये फरमाया कि वली वो है कि बंदा जब उसको देखता है तो फिर उसे देखकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद आती है, तो वली वो होता है। अभी ऐसा भी कभी होता है हमारे मुआशरे में कि भाई बहुत ही माजरत के साथ कि हमने ऐसों को वली बनाया हुआ है कि जिनको देखकर हमें दौलत का एहसास होता है, ये क्या बड़ी गाड़ी है वली, ये हमारे पीर साहब की, क्या बड़ा बंगला है पीर साहब का, कितनी प्रॉपर्टी है पीर साहब की। तो ये कॉन्सेप्ट अभी रीसेंट कॉन्सेप्ट है। पहले विलायत का कॉन्सेप्ट जो होता था, गौस पाक की खुद अपनी ज़बानी में आपके सामने अर्ज़ करूँ, दैट व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ विलायत इन द टाइम ऑफ हज़रत गौसुल आज़म दस्तगीर फ्रॉम हिज ओन वर्ड्स। गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ही मेंशंस दैट every time when I get some money, the money does not stay in my hand. कि जब भी मेरे पास कोई पैसा आता है तो फिर वो मेरे हाथ में रुकता नहीं है. Every time I have some money, it does not stay in my hand. What was the reason? कि हमारा तो ये हाल हो गया है, ठीक है, कि हम पैसा जमा करते हैं,
हम ये देखते हैं कि कल मेरे पास 2000 था, आज वो कहाँ पहुँचा है. Our concept is different. When it comes to money, we think about that yesterday I had 2000, end of today how much have I saved up. Ghaus Pak radiallahu ta'ala anhu, Shaykh Abdul Qadir Jilani, he says that when the money comes, it does not stay on my hand, it goes away. Where would it go? It's been mentioned that anyone who would come to Hazrat Shaykh Abdul Qadir Jilani Muhyiddin radiallahu ta'ala anhu, every time anyone would come, any faqir would come, he would not leave empty-handed from the bargah of Ghaus Pak. And one of the most important thing which has been written in the books of Seerah of Hazrat Ghaus Pak radiallahu ta'ala, that Ghaus Pak radiallahu ta'ala anhu, every day he used to wear new jubba, every day. And he used to wear the expensive one. महंगे रोज़ाना एक जुब्बा गौस पाक नया पहनते थे. अब इसके पीछे हिकमत क्या थी? क्या गौस पाक माज़अल्लाह फजूल खर्ची करते थे? तो इसके पीछे हिकमत, and the wisdom behind this was that every night when he would take that garment off, that garment would go to a faqir and he would make some money out of it. कि गौस पाक जिस रात उस जब्बे को उतारते थे, वो जब्बा फ़कीरों में तकसीम होता था, वो खैरात कर दिया जाता था और वो फ़कीर उसके ज़रिए कुछ माल हासिल कर लेता था. It's part of the generosity of a wali of Allah subhanahu wa ta'ala. We buy clothes, and the only time when we give clothes in clothing bank, when they are no longer, good looking, when they're no longer able to give us what we want from there. And then those clothes, they go to clothing bank. Ghaus Pak and likes of Ghaus Pak, the awliya Allah, they always cared about the weak in ummah, and people who used to be at the bottom always were looked after by awliya kiram, and especially Hazrat Shaykh Abdul Qadir Jilani Muhyiddin radiyallahu ta'ala. There have been many books of seerah written about Hazrat Ghaus Pak's life, and in fact, I personally haven't seen, other than the seerah of Prophet ﷺ, among awliya, I'm talking, among the saints of Allah subhanahu wa ta'ala, there hasn't been any personality on whose life so many books have been written. I will give you a gist of it. In regards to the life of Hazrat Ghaus Pak radiallahu ta'ala, the book was written in 693, the first book, 693 Hijri, and the book was known as Qala'idul Jawahir. Another book was written, Bahjatul Asrar, which is very famous. Even today you can purchase that book and read the history of Hazrat Ghaus Pak radiallahu ta'ala. This book was written at the time of 713 Hijri, which is almost 700 years ago. At that time, this book was written. And this was written by Hazrat Ali ibn Yusuf Shatmufi rahmatullahi ta'ala alayhi. And another book was written in 726 Hijri. The name was Manaqib al-Shaykh Abdul Qadir, and it was written by Qutbuddin Musa al-Hanbali. All of these are some of the very well-known, prominent scholars of their time, and they wrote massive seerah in regards to Hazrat Ghaus Pak radiallahu ta'ala. They have mentioned the karamat and the miracles which were occurred in the life of Hazrat Shaykh Abdul Qadir Jilani radiallahu ta'ala, and the way he led his life, and he became an icon for the people of that time and for people later on. Hazrat Ghaus Pak radiallahu ta'ala, he was very young, and at that time he lost his father. Somebody questioned Ghaus Pak that what was the reason that you went and traveled to Baghdad, the capital of Iraq. Ghaus Pak is not originally from Baghdad. Yes, his mazar is in Baghdad, and Baghdad is famous with the name of Hazrat Shaykh Abdul Qadir Jilani radiallahu ta'ala. He was originally from Gilan, which is near Iran. He was questioned about it, that
What became the reason that you traveled to Baghdad? In Bahjatul Asrar, it has been mentioned, one of the books I gave you the list of, it has been mentioned that Ghaus Pak replied to the person that one day, if you look at this background, you will understand that Allah subhanahu wa ta'ala, He chooses His close saints and servants. And when He chooses them from the beginning, Allah subhanahu wa ta'ala, He protects them and He brings them close to the deen. Ghaus Pak radiallahu ta'ala, Shaykh Abdul Qadir Jilani, he mentions that one day I was young. As a child, I was going behind an ox. And just like any other child, I was trying to grab and hold the tail of that ox. एक बैल के पीछे मैं जा रहा था, बच्चा था, बचपने में बच्चे जो करते हैं वो मैंने उस बैल की जो पूंछ थी उसको पकड़ना चाहा. And when I tried to hold the tail, that ox turned around. And in very beautiful Arabic language, he said to me, he said, "You, Abdul Qadir, you haven't been created for this." Now this is from Allah subhanahu wa ta'ala. The taqat and the ability in animals to speak to human, it's not the ability of that animal. It is from Allah subhanahu wa ta'ala. The ability of newborn baby speaking in a beautiful language of that time, in the time of Yusuf alayhi salam, it wasn't the baby's ability. It was given to the baby by Allah subhanahu wa ta'ala. All of this is from Allah. And Ghaus Pak said, after that, I went to my mother. I said to my mother that you have to give me a way in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Because his mother and Ghaus Pak were the only one at home. And if Ghaus Azam, Shaykh Abdul Qadir Jilani, leaves the house to acquire the knowledge of deen, what will happen to the mother? At the end of the day, the mother was pious, Sayyidah Fatima radiyallahu anha. And what she did, that some money Hazrat Ghaus Pak's father had left, she gave it to Ghaus Pak, and she said, you can travel and acquire the knowledge, go Baghdad. And that is how Hazrat Ghaus Pak Shaykh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala anhu, he reached Baghdad. His connection with the ilm and with knowledge is not hidden. Ghaus Pak radiyallahu ta'ala anhu की ilm से जो दोस्ती है वो किसी से छुपी हुई नहीं है. आजकल हमारा हाल ये हो गया है कि भाई हमारी कम इल्मी और हमारी जिहालत का आलम ये है कि हम हर ऐरे गैरे को जो है समझ लेते हैं कि ये बहुत बड़ा पीर है. Any person who comes with any charm, we think this is the greatest wali. We think this is the biggest peer. This wasn't the work that Ghaus Azam radiyallahu ta'ala anhu, he presented in front of the ummah. This is not what he taught us. We have seen many people that they have never seen the face of madrasa or the Darul Uloom. कि कभी न मदरसा गए, कभी न दारुल उलूम गए, बस पीर के घर में पैदा हो गए, पीर बन गए. और हमारी आवाम माशाल्लाह इतना इल्म है इनके पास कि भाई उलमा को पीछे बिठा दिया, भाई के पीछे भाग रहे हैं. This is the situation we have now. Ghaus Pak radiyallahu ta'ala anhu, he himself mentioned that darastul ilma hatta sirtu kutuban. I acquired the knowledge and I learned and I taught the knowledge, and through that Allah subhanahu wa ta'ala gave me the rank of Qutubiyat, the highest station that wali could get, a saint could get. तो Ghaus Pak को Qutubiyat जिस तरह से अता हुई है वो सिर्फ Ghaus Azam रज़ियल्लाहु ताला की इबादत ही नहीं. Ghaus Pak ने खुद फरमाया कि मैं दीन की तालीम पढ़ता रहा, हासिल करता रहा और पढ़ाता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मुझे कुतुबियत का मर्तबा अता फरमाया. यहाँ मामला ये होता है कि नमाज के मसाइल का इल्म नहीं होता है, पीर बने हुए हैं. ये पता नहीं होता है कि सजदा कैसे करना है और पीर बने हैं. और उसके बाद फिर हमारी आवाम आंखें बंद करके उनके पीछे भागती है. ये हमारा तरीक़ा नहीं है. Ghaus Pak रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने
आप जानते हैं तबलीग करना कब शुरू किया? When did हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु started teaching people? At the age of 50. कितनी उम्र में? 50 साल की उम्र में पहली तकरीर गौसे पाक ने की है. At the age of 50 he started teaching people. What was he doing till then? Gause Pak radiallahu ta'ala anhu, he was going through hardship to please Allah subhanahu wa ta'ala, and with that he was acquiring knowledge. इल्म हासिल करते हुए उन्होंने ये 50 साल का अरसा गुजारा है. और हमारा हाल बड़ा अजीब हो गया है. कभी कभी तो उम्मत के ऊपर और लोगों के ऊपर मुझे ताज्जुब होता है कि ये जानते हैं कि इस बंदे के पास कुछ नहीं है. तावीज़ों का भी यही हाल है. सर में दर्द हुआ तो पहले हमें नज़र आता है कि किसी से पूछूं कि आप चेक करें कुछ हुआ तो नहीं है मुझे. तो इसमें एक नुस्खा मैं ज़रूर यहाँ अर्ज़ करना चाहूँगा. चूँकि गौसे पाक की बात है तो गौसे पाक तो सच्चे थे. आजकल हम झूठों के पीछे जो भाग रहे हैं, तो यहाँ मैं एक बात अर्ज़ कर दूँ कि रुक़िया सही है. इस्लाम में रुक़िया की इजाज़त है, तावीज़ की इजाज़त है, किसी को पढ़ के फूंकने की इजाज़त है. लेकिन अगर किसी बंदे को कोई परेशानी है, उस परेशानी पर अगर आप किसी को फ़ोन करते हैं और वो कहता है कि इतना पैसा लगेगा, if a person needs ruqya to be done and he rings someone, he knows that this person does it, he rings them, and now that person says it will cost you 50 quid. This is the first red light. You need to understand that this person is doing business. कि जो किसी के इलाज करने का पैसा लेता हो, वो भी कुरान पढ़ के इलाज करना है, उसका अगर पैसा लेता हो तो उससे आपको कौन सी शिफा हासिल होगी? तो याद रखें कि जो जेन्युइन लोग होते हैं, जो दुआ तावीज़ करते हैं, वो चार्ज नहीं करते हैं. They won't tell you that pay me 150 pounds before you come, or give me 25 pounds for this material. This is not the way. और मैं डरता नहीं हूँ, मुझे किसी का खौफ नहीं है, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद, अल्लाह का शुक्र है कि इसमें पढ़ता नहीं. उसकी वजह यही है कि आदमी में लालच आने लगती है, आदमी में फिर हिर्स आ जाता है कि भाई कोई आता है तावीज़ कर दिया, 50 पाउंड ले लो, इजी मनी. तो इससे बचो. ऐसे लोगों को तलाश करो कि जो वाकई गौसे पाक की तालीमात के ऊपर चल कर आपको मदद करते हों. गौसे पाक ने लोगों से पैसा नहीं लिया है, गौसे पाक ने लोगों को पैसा दिया है. गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, he never gathered money for himself. In fact, Sheikh Abdul Qadir Jilani रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, he has spent on the ummah, on people. लोगों पे उन्होंने खर्च किया है. आपको ज़रूरत हो, पीर के पास बंदा जाए, पीर पूछता है कि तुम्हारा हाल क्या है, तुम्हारी फाइनेंशियल हालत कैसी है, और फिर पीर सामने पैसा दे, उसको पीर कहते हैं कि भाई मेरा मुरीद तकलीफ में है, इसको परेशानी है, मैं इसको 50 पाउंड दूं. ऐसा नहीं कि मुरीद कितना ही गरीब हो, कितनी भी तकलीफ में हो, फिर भी पीर साहब को ये उम्मीद है कि कुछ मिल जाए. This is not the concept. Gause Pak radiallahu ta'ala anhu was, and this is not the concept of Ahlus Sunnati wa Jamaat either, that taking money for people in the name of deen and in the name of ta'weez, in the name of ruqya, this is not the way of Ahlus Sunnati wa Jamaat. The way of Ahlus Sunnah, help people unconditionally. पैसों के लिए किसी की मदद तो हर कोई करता है. काफिर भी लोगों को पैसों के जरिए मदद करते हैं, डॉक्टर भी लोगों को पैसों के जरिए मदद करते हैं. लेकिन हम क्या करते हैं? दिस इज व्हाट गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु and his zaat was about. दरस्তুल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबन. गौसे पाक ने जहालत की तालीम नहीं दी है, गौसे पाक ने इल्म का दर्स दिया है. In the madrasa of Gause Pak radiallahu ta'ala, he taught for 33 years in his life, and during those 33 years, every year, there used to be 3,000 graduates. How many? 3,000. At the end of 33 years, there were around and approximately 100,000 students who acquired knowledge in the feet of Gause Pak radiallahu ta'ala anhu, and they graduated. 1,00,000 लोग आपके मदरसे से तकरीबन फारिग हुए. वो सिर्फ मस्जिदों के मुसल्ले संभालने वाले नहीं थे हमारी तरह, इंक्लूडिंग माई सेल्फ. अमंग देम
There were people who participated in the army of Hazrat Sultan Salahuddin Ayyubi rahmatullahi ta'ala alayhi. And I'll give you one of the name. In the army of Hazrat Sultan Salahuddin Ayyubi, there was a chief advisor, Ibn Qudama Hanbali rahmatullahi ta'ala alayhi. He was direct student and murid and the disciple of Hazrat Ghaus Pak radiyallahu ta'ala and Sheikh Abdul Qadir Jilani. This was the work that they presented. This was something which we class as true Ahl Sunnati wa Jamaat. लोगों को लूटने का नाम, लोगों की ज़िंदगियों को तबाह करने का नाम अहले सुन्नत नहीं है, बल्कि लोगों को अपने हर तरीके से, आपको अल्लाह ने रूहानी इल्म दिया है उसके ज़रिए मदद करो, अल्लाह ने आपको इल्म दिया है तो अपने मसाइल को और अपने वक्त को न बेचो, बल्कि लोगों की मदद अल्लाह के लिए फ़ी सबीलिल्लाह करो। अल्लाह देता है, उसकी मर्ज़ी है। तो ये चीज़ है। तो आज का जो खुलासा मैं अर्ज़ कर दूँ, पहली बात तो ये कि इल्म से connect yourself with the knowledge and with the love of awliya Allah and the saints of Allah subhanahu wa ta'ala, because they were the people Allah ta'ala mentioned that in awliya'uhu illa al-muttaqun, that Allah ke wali wo hai ye jo muttaqi hai, they spend their whole life pleasing Allah subhanahu wa ta'ala. Second thing, that you need to be aware of your surroundings. जहाँ पर भी दीन को बेचा जा रहा हो, जहाँ पर भी कुरान को बेचा जा रहा हो, जहाँ पर भी फूंक मार के पैसे लिए जा रहे हों, वो हमारी जगह नहीं है। न वो अहले सुन्नत व जमात का तरीक़ा है, बल्कि वो तरीक़ा लोगों से पैसा वसूलने का तरीक़ा है। सो बी अवेयर ऑफ दीज obstacles in your life and look at the life of these greatest personalities who have spent and gave up everything for the sake of deen, for the sake of Allah and His Rasul sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Allah ta'ala बोलने या सुनने में कोई अमदन सहवन गलती हुई हो, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। किसी भाई का दिल दुखा हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह ताला मुझे भी माफ़ फरमाए, आपको भी माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।